चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। Now moving on to some tragic news coming in from Jammu and Kashmir. At least 22 people have died, while more than 70 others were left injured after a bus rolled down in a deep gorge in Akhnoor area. Now soon after the incident, a rescue operation was launched. Samiksha. Yes, so very unfortunate news, tragic news that's coming in from Akhnoor, where 22 people have died. And 70 others have been injured after a bus rolled down in a deep gorge in Akhnoor area. Let's go across to Gursimran as well, Guinea, who's joining us to get us more details. All right, we will be joined by Gursimran in just a bit. But to tell our viewers, this is the news that's coming in from J&K's Akhnoor area, where 22 people have died, while 70 others have been injured after a bus rolled down in a deep gorge. A rescue operation was launched, but tragic that 22 lives have been lost in this incident. Let's go across to Gursimran, who is joining us with more details. Gursimran, give us more details of this tragic incident coming to light, one. And also we understand that a probe has been ordered into what exactly transpired this morning. Yes, Samiksha, 22 people have lost their life while 71 others were injured in a bus that has a capacity of 60 people. 93 people were traveling. However, some of them were minors also, but it was something what seems that there were extra people that were inside bus. The bus was overloaded. Now all those 71 who are being under treatment, they are being treated at the Government Medical College. A high-level probe under the chairmanship of the Additional Deputy Commissioner Jammu has been ordered, and it will submit its reports within 7 days. Right now we are at the Government Medical College, which is treating all these patients that have sustained injuries. 22 people have lost their life, and now the efforts are on to save the precious lives. So yesterday, the role that the police and the health department has played is really very important. We'll try to speak to some of those who have got injured, what they have to say, how actually the things have transpired. Baba, आपका नाम? रणवीर। हुआ क्या था कल आप जब निकले, ये एक्सीडेंट जब हुआ, क्या हुआ पूरा वाकया? बाका दे भयो का सब नीचे दबी गई गाड़ी में, लेकिन जा का को ने मो को ने करे को लगे ओ का वो ने करेगो, वाने कोशिश करिए ने कारबे की, फिर ने करी करम बालक वहां जान का ने सुनी कि आयो कोई ने कोशिश करिए ने करवाएगी। फिर आपको निकलवाया क्या? ना, मैं तो खुद सीट के जो बैठे हुआ खिड़की के साथ ने करे आयो मैं, पर मुझे ना पता पड़ी कि मेरी लग गई है। ये नहीं पता था। विल ट्राई टू स्पीक टू सम मोर ऑफ द पेशेंट्स व्हाट दे हैव टू से। मैडम, आपका नाम? अनीता। अनीता जी, हुआ क्या था कल? ये हुआ था, आगे से तो गाड़ी आ रही थी छोटी वाली जी, और जैसे ही वहाँ कटकली बहुत कट करी उसने, पर उस पर मुड़ी नहीं थी ड्राइवर ने। हम बिल्कुल ड्राइवर के पास में बैठे थे, बहुत कोशिश करी, नहीं मुड़ी, तो हमें तो एक संग लगी कि गए हम तो। सबने भोले बाबा को नाम लियो, फिर भी गाड़ी तो नहीं रुकी। पेड़ में टकराई, 3 बल्ला लिए गाड़ी ने, तो गाड़ी ऐसे करके सीधी हो गई। हम निकल गए, कुछ हमारे बंदे वो हमने खुद ने निकाले अपनी, हमें ये नहीं पता कि हमारे लगी है, अपने बंदे निकाले हमने, तो सारे बंदे निकाले, हाथ जोड़ी भगवान से प्रार्थना करी कि सारे ठीक निकले। पीछे वाले इनकी नहीं पता भैया, जितने मुझे दिखा जाकर को हाथ पकड़ो या जिंदा है इनको निकालो, निकाले, फिर बाद में नहीं पता हमको। बाद में नहीं पता है। There is a person who was at the door of this bus and he jumped all of a sudden when this incident took place. There were 2 people. We'll try to speak to them also. भाई साहब, आप क्योंकि जो बस है उसकी खिड़की में थे, हुआ क्या था आपको? क्योंकि समझ तो आ गया होगा जब ये बस गिरने वाली थी। मतलब चल तो रही 15 रेस अब चल रही ना जी। हाँ जी, इसलिए फिर उस पर कवर है भाई, बैलेंस खराब होने के कारण
खाई में कूद गई, फिर नहीं रुकी। जब आपने देखा गाड़ी खाई में जा रही है तब आप लोग कूदे? हाँ, हम ही कूदे थे, खिड़की पे थे, दोनों भाई हम गाँव के, ये दोनों कूदे तो 3 पलटा लेके फिर पता लगा इतना बड़ा हादसा होगा, कम तो 80 फुट नीचे खाई वो। तो फिर आपने बाकी लोगों को भी निकाला, तब रेस्क्यू ऑपरेशन तभी साथ में ही शुरू हो गया? हाँ जी, संग की संग मतलब हम लोग खींचे 2-4, फिर और लोग आ गए, फिर तुम्हारी और टीम आ गई बहुत सी। जब निकालना शुरू हुआ 4-5 घंटा में लेकर पाए सफर। उस समय में रेस्क्यू हो गया इसलिए कुछ जाने बच गई? हाँ, जा रहे हैं बच्ची और कुछ खत्म हो गए संग की संग स्पॉट। So, Samiksha, you can understand that how the things have transpired. Now they are being treated at the government medical college. The administration, the health department is ensuring that the precious lives can be saved. At present, 71 is the number of people who are undergoing treatment, out of which 4 to 5 are said to be critical. They are being given the specialized treatment. Today, the team of the Uttar Pradesh police, they will also be reaching here, as most of the families are from the Hathras, the Agra and the nearby areas. Those who have come to pay obeisance at the Shri Mata Vaishno Devi Ji shrine in the Katrand were way towards the holy shrine of Shiv Khodi in the Riyasi district only. Samiksha.